और आपको बताएं कि बर्मिंघम के नवाही एरिया शेनस्टोन में एलिट सिस्टम्स यूएवी इंजन फैक्ट्री के बाहर इसराइल को हथियारों की फरोख्त और बरतानवी फौजी ड्रोन्स की तैयारी के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें मिडलैंड्स भर से ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि वो इन मौत के कारखानों को बंद करवाने के लिए अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के नवाही एरिया शेनस्टोन में एल्बर्ट सिस्टम्स की यूएवी इंजन फैक्ट्री के बाहर इसराइल को हथियारों की फरोख्त और बरतानवी फौजी ड्रोन्स की तैयारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। ये फैक्ट्री जो इसराइल के फौजी ड्रोन्स के पुर्जे फराहम करती है, मुसलसल तनकीद की जद में है, क्योंकि इन हथियारों को फलस्तीन में मुबैयन नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शेनस्टोन में ये फैक्ट्री बरतानिया में एल्बर्ट की आखिरी चंद फैक्ट्री में से एक है, जबकि कारकुनों के दबाव की वजह से 3 दीगर साइट्स को बंद किया जा चुका है। मुजाहरे में शरीक अफराद का कहना था कि उनकी कोशिशें न सिर्फ बरतानवी हुकूमत की तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल करवाने के लिए हैं, बल्कि वो आलमी बिरादरी को भी खबरदार करना चाहते हैं कि इसराइल को हथियारों की फराहमी जंगी जराइम में मुआवनत के मुतरादिफ है। मुजाहरे में शरीक फलस्तीन तहरीक के कारकुन शकीला बीबी और दीगर ने CNI न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया की हुकूमत और अदालती निज़ाम इसराइल को हथियारों की फरोख्त के मामले में इखलाकी पोजीशन तक पहुंचने में नाकाम रही है और इस तरह ये लोग जंगी जराइम में मुलव्विस हैं। हम बरतानिया से ये तवक्को करते हैं कि वो बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल जैसी रियासतों को हथियारों की फरोख्त रोकने के लिए इक़दाम करेगा। Here to protest against the genocide that the fact that the Israeli death factory just over there to my left are culpable of and part of, and say not in my name. Over 100,000 Palestinians have died in Gaza, and the factory there is responsible for providing the engines that fly and the drones that assassinate and target and murder innocent Palestinian men, women and children. This is a factory which we have been coming for the last almost 1 year, but people are coming almost plus 10 years. This is a factory which basically provides drones and engines to Israeli army, which is causing all genocide there. So our aim is to just shut this factory down as quickly as possible. There are a total of 10 factories in UK, 3 have been shut down. But the genocide in Gaza, the spread of war into the Middle East, namely Lebanon, Iran and potentially Jordan and the other Middle Eastern states. And I'm here to protest about our government in supporting Israel in the genocide which they have done since 1917 and the Balfour Declaration. They are controlled by the Zionists in here and in America. It doesn't matter whoever comes in power in America, they're both the same. They are bad as each other. UAV engines factory in Shenstone, because we want this death factory shut down for good. They make 80% of the weapons that go to Israel come from Elbit. The engines to the drones used in the compartments for the drones that are used to kill Palestinians are made here. We want this death factory shut down so that innocent people are not killed as a result. I'm here because I want to protest for the right for Palestine to be free, and I'm absolutely horrified by the way in which Israel is being allowed to commit genocide against the Palestinian people. We are here today to protest against the army, the Elbit System, the killing factory, killing children. Over thousands of children in Palestine are murdered by Israel, and the UK government is complicit. All children are the same, no matter where you're from, and we don't want the drones being made in Birmingham. Today at Elbit Systems in Shenstone, where they produce about 80% of the components for the drones which are flying over Gaza and Lebanon right now. मुजाहिरीन का कहना था कि वो इन मौत के कारखानों को बंद करवाने के लिए अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि वो उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। ये देखना बाकी है कि आया बरतानवी हुकूमत इन मुजाहिरों को नजरअंदाज करती रहेगी या इसराइल के साथ असले की तिजारत पर कोई नजर सानी करेगी।